So let us continue our discussions on the properties. So already I have discussed the properties of conjugate of a complex number. Today I am going to discuss about properties of modulus of a complex number. Okay, properties of modulus of a complex number. Say if z1 and z2, if z1 and z2 are three complex numbers, if z1 and z2 are three complex numbers belongs to C. C means the set of all complex numbers. C means the set of all complex numbers. Then number 1, modulus of minus z. Modulus of minus z is equal to modulus z. Property number 1, modulus of minus z is equal to modulus z. Say let us consider z is equal to a plus ib. Therefore, mod z we know root over a square plus b square. Yes, mod z का value root over a square plus b square होगा. Then what is mod of minus z? Look at here, mod of minus of a plus ib. Mod of minus of a plus ib, this is equal to mod of minus a minus ib. Yes, so this is equal to under root minus a whole square plus of minus b whole square. So ultimately बात तो सेम ही होगा, that is root over a square plus b square only. Okay, so therefore we can say that mod of minus z is equal to mod z. Okay, this is property number 1. This is property number 1 और ये है इसका proof. ठीक है. So next property number 2. Property number 2 is z bar modulus is equal to mod z. Modulus of z bar is equal to mod z. This is property number 2. So again let us consider z equal to a plus ib. Therefore mod z is equal to, we know, root over a square plus p square. Alright. Therefore modulus of z bar कैसे निकाला जाएगा? So let us find first z bar. So z bar will be a minus ib. If z bar is a minus ib, then modulus of z bar, this is equal to root over a square plus b square only. Yes, so that is why we can say that mod of z is equal to mod z bar. Okay, this is property number 2. Next property number 3. Property number 3. Modulus of z1 into z2. Modulus of z1 into z2 is equal to modulus z1 into modulus z2. Modulus of z1 into z2 is equal to mod z1 into mod z2. So let us consider some examples. Say z1 is equal to a plus ib and z2 is equal to, say, c plus id. Then modulus of z1 का value क्या होगा? Root over a square plus b square. Yes, similarly modulus z2 is equal to root over c square plus d square. Alright. Now what about the left hand side? Modulus of z1 into z2 is there. So let us find first z1 into z2. If you know the value of z1 into z2, then only we can find the modulus. They are modulus. Alright. So a plus ib into c plus id. Expand it. ac plus I into AD plus I into BC minus BD. Yes or no? I into I square, that is minus 1 only. So AC minus BD plus I into AD plus BC. So ये है Z1 into Z2 का value. Therefore mod of Z1 into Z2, which is equal to under root AC minus BD whole square plus AD plus BC whole square. Yes, mod of Z1 into Z2 तो यही होगा, because if Z equal to Z1 equal to A plus IB, then mod Z1 equal to क्या होता है? Real part square plus imaginary part square. तो वही लिखा real part square plus imaginary part square. So now you expand it. A minus B whole square में अगर expand करूंगा तो फिर क्या होगा? A square C square minus 2ABCD plus B square D square plus A square D square plus 2ABCD
plus b square c square. So plus 2abcd minus 2abcd will be cancelled. Everything is there in under root only. Okay, ये सब कुछ रूट ओवर के अंदर ही है, स्पेस नहीं है इसलिए नीचे लिखा. ऑलराइट, सो दिस इज इक्वल टू, here now we can write a square c square plus b square d square plus a square d square plus b square c square. These are the four terms we left after cancellation of 2abcd. Alright, now what you have to do, look at here, a square c square a square d square. So take a square common, c square plus d square, plus from the second and fourth term if I take b square common, this will be c square plus d square again. So root over a square plus b square into c square plus d square. Yes, so this can be written as root over a square plus b square into root over c square plus d square also. Okay, ये एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है. So this is nothing but mod z1 into mod z2 only, because the value of mod z1 is root over a square plus b square, whereas the value of mod z2 is root over c square plus d square. All right, so in this way we can prove. Okay, so this is property number 3. Properties of modulus of a complex number का ये property number 3 है. All right, so next the fourth one, fourth property is modulus z1 by z2, which is equal to mod z1 by mod z2. Modulus of z1 by z2 is equal to mod z1 by mod z2, provided mod z2 is not equal to 0. Provided mod z2 is not equal to 0, because if the denominator is 0 then it will be undefined only. Alright, so these are the properties of modulus of a function. So I am not going to give the derivation of the fourth property. If you know how to derive the third one, already I have explained the third one, so you can try to solve the fourth one also. So fourth property में भी क्या करना है, z1 equal to a plus ib लेना है, z2 is equal to c plus id. उसके बाद you know the division rule. In the last class only I have explained about the division rule. So apply the division rule and then find out their modulus. You will get the answer. Okay. So property number 4 हो गया. So these are the properties of modulus of a complex number. So till now I am giving only the properties or everything. I have not started the numericals. So after completing the square root of a complex number, इसके बाद मैं अभी सिखाऊंगा स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का. वो उसके बाद आर्गन प्लेन के बारे में डिस्कस करना है, बिकॉज आर्गन प्लेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर कॉम्प्लेक्स नंबर. ऑलराइट, so now I am going to discuss about square root of a complex number, how to find the square root of a complex number. Okay, so to evaluate the square root of the complex number a plus ib, listen, to evaluate the value of root over a plus ib, root over दे दिया इसीलिए square root बोल रहा हूं मैं. ठीक है, so a plus ib क्या है, it is the standard form of a complex number. All right, so to find the value of root over a plus ib, the first step is let root over a plus ib is equal to x plus iy. Whatever complex number will be given, so whenever you are asked to find the square root of any complex number, first of all you have to check whether the given complex number is in the form of a plus ib or a minus ib. If the complex number is in the form of a plus ib, then consider that square root of the complex number is equal to x plus iy. But if the given complex number is in the form of a minus ib, so to evaluate root over a minus ib, we have to consider x minus iy. मतलब साइन के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर a minus ib फॉर्म में होगा तो then you have to write is equal to x minus iy. But if the complex number is in the form of a plus ib, then you have to consider the square root of the complex number is equal to x plus iy. The square root of the complex number equal to x plus iy, not only a plus ib. ठीक है, so square root of this a plus ib equal to say x plus iy. All right, now squaring on both sides,
I'm giving the steps, I'm giving the working rules how to find out the square root of a complex number. This is the first step. Let us consider the given square root of the complex number is equal to x plus iy. Second step, squaring on both sides, that is a plus ib is equal to x plus iy whole square. Now expand the right hand side, x square plus 2xy into I plus iy whole square, or it can be written as x square minus y square plus I into 2xy. Yes. So after squaring on both sides, now equate the real and imaginary part. Equate the real and imaginary part. So here the real part is a. So a equal to x square minus y square, and b is equal to 2xy. Alright. After equating the real and imaginary part, now let us find the value of x square plus y square. These are the steps. Let us find the value of x square plus y square, because already we know the values of x square minus y square. That is why I am trying to find out the value of x square plus y square now. Why? What is the reason? Because जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए दिया, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट को क्या एज्यूम किया, x प्लस आई वाई. So that means we have to find the values of x and y. Yes or no? If you know the values of x and y, then only you can put here in this equation. So that for this reason only I am trying to find out the values of x square plus y square, because we know the value of x square minus y square already. Okay. So x square plus y square equal to क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट x square minus y square whole square plus 4x square into y square. That is a square plus b square formula only. Okay. a square plus b square का फॉर्मूला ही यूज किया गया है यहाँ पे. x square minus y square whole square plus 4x square y square. So now put the values of x square minus y square, which is a square, plus 4x square y square can be written as a 2xy whole square. So the value of 2xy is b. So that means it is b square only. So this is the value of x square plus y square. So this is, let us consider x square minus y square equal to a as equation 1, and x square plus y square is equal to this one as equation number 2. Alright. So once again I am repeating, x square minus y square का वैल्यू इक्वेट करने के बाद मिला, रियल और इमेजिनरी पार्ट जब इक्वेट किया तब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का वैल्यू मिला. अभी मैं क्या निकाला, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू. व्हाई? बिकॉज इफ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देन वी कैन सिंप्लीफाई, वी कैन सॉल्व दिस टू इक्वेशन टू फाइंड आउट x एंड y. हम लोगों को x और y का वैल्यू ही जरूरत है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है. और यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज किया मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला. वी ऑल नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू वही फॉर्मूला है. यस और नो? व्हाट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर? वी ऑल नो दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो वन मोर फॉर्मूला इज देयर ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab. दैट फॉर्मूला ओनली आई हैव यूज्ड हियर. Okay, this formula only I have used here. So this is equation number 2, this is equation 1. So now 1 plus 2, 1 और 2 को अगर ऐड करूंगा तो y square will be cancelled. So 2x square is equal to क्या रहेगा, a plus root over a square plus b square. That is x square is equal to 1 by 2 into a plus root over a square plus b square, और x is equal to प्लस माइनस ऑफ 1 बाई रूट 2, प्लस माइनस ऑफ, नहीं तो और एक काम कर सकते हैं कि एक साथ रूट ओवर के अंदर सब डाल देते हैं. सो प्लस माइनस ऑफ 1 बाई 2 इंटू ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स. सिमिलरली नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई. अभी y का वैल्यू निकालूंगा तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे 1 और 2 को ऐड करने के बाद x का वैल्यू मिला, वैसे ही 1 माइनस 2 करने से क्या मिलेगा, इफ आई सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 करने से x स्क्वायर विल बी कैंसिल. सो माइनस ट्वाइस y स्क्वायर, माइनस ट्वाइस y स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा क्या, a
minus root over a square plus b square. All right, then you take minus common, so this will be then y square is equal to 1 by 2 into root over a square plus b square minus a. Yes, root over a square plus b square minus a, or y is equal to can be written as plus minus of root over 1 by 2 into under root a square plus b square minus a. So this is the value of y. This is the value of y. Okay, so like this only we can find out the values of x and y. तो चलो अभी x और y का वैल्यू निकल गया. So therefore the required answer, that is जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए दिया, विच इज इक्वल टू क्या लिखा गया था, x प्लस आई वाई. ऑलराइट, so now put the values of x and y. The value of x is this one only, so take a plus minus sign common. Take plus minus sign common, then you put the value of x 1 by 2 whole into root over a square plus b square plus a plus then I into y. So I into, then again put the value of y now 1 by 2 bracket under root a square plus b square minus a. So this is the required answer. ठीक है, नो नीड टू बाय हार्ट दिस रिजल्ट. जब हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है. नो नीड टू बाय हार्ट दिस रिजल्ट. एक्चुअली these are the working rules, these are the steps to find out the square root of any complex number. So now I am going to discuss a few examples. All right, so let us discuss few questions. Find out the square root of this complex number. Question is root over minus 5 plus twice 12y. Okay, root over minus 5 plus 12y. You are asked to find the square root of this complex number. So first of all, you check the given complex number, whether the complex number is in the form of a plus ib or a minus ib. It is in the form of a plus ib only. So since it is in the form of a plus ib, so let the given complex number is equal to x plus iy. Okay, this is the first step. What is the second step? Squaring on both sides. Minus 5 plus 12i is equal to x plus iy whole square. Then expand it, x square plus 2ixy plus y square. Yes, sorry, this will be iy whole square. So इसको क्या लिखा जाता है, तो फिर x square minus y square plus I into 2xy. Yes, after expansion now what you have to do? Equate the real and imaginary part. Now if I equate the real and imaginary part, we will get x square minus y square is equal to minus 5. Say this is equation number 1, and twice xy is equal to 12. This is say equation number 2. Alright, इसके बाद क्या find out करना है? Actually you have to find the values of x and y only. Alright, so to find the values of x and y, now find out the value of x square plus y square. So x square plus y square is equal to क्या होता है, root over x minus y whole square, sorry x square minus y square whole square होगा यहाँ पे, plus 4x square into y square. Now put the values, that is minus 5 whole square will be 25 plus, if 2xy is equal to 12, then 4x square y square will be 12 square. 12 square means 144. That means 25 plus 144 is 169. This is equal to 13. Say this is equation number 3. Alright, now solve 1 and 3. Equation 1 and 3 को solve करना है. So अगर 1 plus 2 करूंगा तो 1 और 3 add करूंगा तो क्या मिलेगा, twice x square. This is equal to minus 5 plus 13. That is equal to 8. So therefore x square equal to 4 और x equal to plus minus of 2. हमेशा x और y का वैल्यू ऐसा दो वैल्यू ही आएगा, प्लस एज वेल एज माइनस साइन में. ठीक है, ओके चलो, तो फिर 1 और 3 को ऐड किया. अभी 1 और 3 को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फिर क्या मिलेगा, सो से 3 minus 1 करने से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर के एलिमिनेट हो जाएगा. सो ट्वाइस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 plus 5, that is 18. That means y is equal to plus minus of 3. Yes, x equal to plus minus 2 and y is equal to plus minus 3. अभी देखो कौन सा साइन यूज करना है, प्लस साइन भी है यहाँ पे, माइनस साइन भी है.
सो स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला गया है ना. सो ऑलवेज यू हैव टू कंसिडर बोथ द साइन, दोनों साइन को ही लेना पड़ेगा. बट द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी टेक बोथ द साइन. So first of all you have to take x equal to and y equal to the same value, same sign. You have to consider the same sign. अगर x का वैल्यू पॉजिटिव लेना है तो y का वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए. अगर x का वैल्यू नेगेटिव लेना है तो y का वैल्यू भी नेगेटिव लेना है. ओके, सो हमेशा x और y का वैल्यू मतलब साइन, नॉट वैल्यू, x और y का साइन सेम होना चाहिए. ओके, so if I take x equal to 2 and y equal to 3, therefore the square root of the complex number -5 plus 12y is equal to, x का वैल्यू 2 लिया तो फिर 2 लिखो, प्लस I into 3 और 3 into I. Similarly, when x equal to -2 and y is equal to -3, then the square root of the complex number -5 plus 12i is equal to -2 minus I root 3. So these are the possible answers. दोनों ही आंसर पॉसिबल हो सकता है बिकॉज स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए दिया ना. जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 मिला तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस साइन क्यों यूज किया, बिकॉज यार वी आर कंसिडरिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज. ओके, सो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए जब देगा तब दोनों साइन ही लेना पड़ेगा. लेकिन साइन कैसे लेना है, हमेशा सेम साइन लेना पड़ेगा. एक्स का वैल्यू पॉजिटिव तो फिर वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, एक्स का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वाई का वैल्यू भी नेगेटिव होगा. ऑलराइट, so this is one example how to find the square root of any complex number. Let us discuss one more example. Let us take one more example. That evaluate under root minus I. Evaluate under root minus I. तो ये माइनस आई का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए दिया. यहाँ पे रूट ओवर के अंदर माइनस आई है, रूट ओवर तो होगा ही बिकॉज स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए दिया. जो माइनस आई है तो मैं क्या बोला था, इफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस आई बी, देन यू हैव टू कंसिडर द गिवन स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू x माइनस आई वाई. अगर इमेजिनरी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो देन यू हैव टू कंसिडर इट एज x माइनस आई वाई. अगर लास्ट क्वेश्चन अगर देखोगे तो लास्ट क्वेश्चन में इमेजिनरी टर्म के साथ प्लस साइन दिया गया था, इसीलिए x प्लस आई वाई कंसिडर किया था. ठीक है, सो लेट अस कंसिडर दिस रूट ओवर माइनस आई इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. सो माइनस आई इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई होल स्क्वायर एक्सपांडेड एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इंटू आई प्लस आई वाई होल स्क्वायर. सो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इंटू आई. यस, so after the expansion what you have to do now, equate the real and imaginary part. What is the real part on right hand side, on left hand side? There is no real part on left hand side, so therefore clearly we can say that x square minus y square is equal to 0. This is the equation number 1. And twice xy is equal to 1 because the coefficient of twice xy is also minus, whereas the coefficient of I is also minus, तो minus minus cancel हो जाएगा तो twice xy is equal to 1 होगा. This is the equation number 2. Next step, what you have to do now? Now try to find the value of x square plus y square. Yes, so we know x square plus y square is equal to what? What's the formula? Under root x square minus y square whole square plus 4x square into y square. So x square minus y square का वैल्यू तो 0 है, तो मतलब ये टर्म 0. What is the value of 2xy? Since 2xy is 1, so therefore the value of 4x square y square is also 1. This is equation number 3. Alright, now solve 1 and 3. Solving 1 and 3, add these two equations. 1 and 3 को अगर ऐड करूंगा तो we will get twice x square. So twice x square is equal to 1. So x is equal to plus minus of 1 by root 2. Again, now if I subtract 3, that is 3 minus 1. 3 minus 1 नहीं तो 1 minus 3 करने से भी होगा, 3 minus 1 करने से भी प्रॉब्लम नहीं है. So 3 minus 1 करने से x square एलिमिनेट हो जाएगा. So twice y square is equal to 3 minus 1, 1 minus 0. This is also equal to 1. Therefore y is equal to plus minus of 1 by root 2. So y और x का वैल्यू plus minus of 1 by root 2 आया. तो अभी क्या करना पड़ेगा, choose the same sign.
choose the same sign now. When x equal to 1 by root 2 and y is equal to 1 by root 2, then the square root of the given complex number is equal to 1 by root 2 plus I into 1 by root 2. Similarly, when x equal to minus 1 by root 2 and y is equal to also minus 1 by root 2, therefore the square root of the given complex number is minus 1 by root 2 plus of minus 1 by root 2 into I. So these are the possible values. Okay, so in this way you can find out the square root of any complex number. Procedure तो सबके लिए सेम है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन जो है वो ठीक से करना पड़ेगा. ठीक है, so this is the important part, how to find the square root of any complex number. ऑब्जेक्टिव के लिए भी important है, इवन सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में भी आता है. Though this square root is not there in your NCERT, but the questions are coming in board exam. So you should know how to find the square root of any complex number. Okay. So in the next class, I will discuss about the argand plane or complex plane. वो important part है बहुत. Objective का point of view से देखोगे तो बहुत ज़्यादा important है. Subjective के लिए भी important है. Question आता है board exam में. ठीक है. So thank you for today.